गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा इकोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जहाँकि तुम कोर पेपर 2 यूनिट 1 रे अच्छी। तो समस्त को आज वीडियो निश्चय पसंद आसो। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक कर। देख यहाँ तो एक्चुअली गोटे एसे टाइप्र क्वेश्चन एटार सेमती किसी बुझार किसी जटिलता ना एथिरे किंतु मेन होचे एथिरे नोट पाइबाटा रहिला जे जोटा आमर जमीक जोटा B.Sc फर्स्ट सेमिस्टर रे जो यही सब्जेक्टा आम केमिति नोट लिखिपर एग्जाम रे सेटा है इम्पोर्टाट। तो तुम समस्त नोट कर जो जगह मुझे बुझेबा कथा निहाती भाव में बुझेबी। देखो वाइल्ड लाइफ इज ए term that refers to animals that are not normally domesticated। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ माने कौन वाइल्ड लाइफ माने अच्छी जोठी कि एनिमल्स माने को आम गृहपालित पशु हिसाब से रखिपर ना से नॉट नॉर्मली डोमेस्टिकेटेड। ठीक अच्छे। तो दे आर द लिविंग रिसोर्स दैट विल डाई एंड बी रिप्लेस बाय अदर ऑफ देयर काइंड। तो से माने कौन से आम गोटे प्रकार रिसोर्स लिविंग रिसोर्स जो मान कि जदि मरिले जगह तांकरी परी आउ जड़े फेर कौन रिप्लेस करके आउ गोटे हो पारती। ठीक अच्छे। तो वाइल्ड लाइफ plays an important role in balancing the environment and provide stability to different natural process of nature। It can be found in the ecosystem, desert, rainforest, plain and other areas। तो बेसिकली आम जानीचु जे जो वाइल्ड लाइफ रो केते इंपोर्टेंस अच्छी आम जो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने। तो या विषय एत मुझे एक्सप्लेन करूनी कहीं तुम ऑलरेडी जानीच जे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने वाइल्ड लाइफ हो बा प्लांट्स हो बा जेतिके भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल लिविंग नहीं सहित किसी नॉन लिविंग थिंग तार केतेटा इंपोर्टेंस अच्छी गोटे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने। ठीक अच्छे। तो देखो नेक्स्ट देखा आम कौन वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टाट फॉर इट्स ब्यूटी इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड सर्वाइवल वैल्यू। इट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड मेंटेन द फूड चेन। It provides useful substances and wild animal products like ivory, leather, honey, टस्क एक्सेट्रा। तो बेसिकली देखो वाइल्ड लाइफ कौन अच्छे वाइल्ड लाइफ अच्छी आमको तार केवल एनवायरमेंटल बैलेंस को से रखे ना आमको इकोनॉमिक बेनिफिट दे थाए आउ कौन आम तार मेडिसिन भी पाई था से आम फूड चेन रे हेल्प करे से आम विभिन्न लेदर भी पाई था हनी भी पाऊ आम घर तैयारी आम काठ भी पाऊ। ठीक अच्छे। तो सब आम सबकि गोटे वाइल्ड लाइफ रू ही आमको बैलेंस करके आम पाई था। Besides being a country's cultural asset, it also provides aesthetic value to men। We largely depend on wildlife for every elementary requirement in our life। For example आम देखा द क्लोथेस वी वेयर एंड द मेडिसिन वी कंज्यूम। तो बेसिकली आम जो कपड़ा पिंधुचु बा जहाँ को मेडिसिन दरकार सेटा आमको यू ही मिलता है। तो देखो यहाँ गोटे रचना टाइप अच्छी। ठीक अच्छे। तो ये तो मुझे बेसी किसी तुमको एक्सप्लेन करूना। ठीक अच्छे। तापर देखो थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ पे कौ प्रकार थ्रेटनिंग अच्छी कौटा हो विपद देखा। वाइल्ड लाइफ इज अंडर थ्रेट फ्रॉम मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट टू स्प्रेडिंग इन्वेसिंग स्पेसीज एंड डिजीज। तो बेसिकली कौन अच्छी ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ गोटे प्रकार थ्रेट बा एटा होची विपद। तो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन तो ह्यूमन एक्टिविटी तुम जब जानिच से माने शिकार करवा किंबा घर तैयारी काठ काटिबा किंबा किछिटा से माने निजर खाद्यपाई मनकर शिकार करवा हो कि गछ पत्र उपर निर्भर करूँ। तो विभिन्न प्रकार जो ह्यूमन एक्टिविटी अच्छी ताकू मध्य कौन अच्छी वाइल्ड लाइफ गोटे प्रकार थ्रेट हिसाब से काम करे। तापर देखो द मोस्ट इकोसिस्टम आर फेसिंग मल्टीपल थ्रेट। ईच न्यू threat put additional stress on already weakened ecosystem and their wildlife। तो जेतिकी भी तुमर थ्रेट अच्छी प्रकृत में आगु जोटा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को ऑलरेडी जोटा स्ट्रेस रखी तार पर आहरी कौन अच्छी एक्सट्रा बर्डन से पकेला कहीं आम दिन को दिन बेसी रू बेसी आम कौन करूँ जो फरेस्ट उपरे हो बा वाइल्ड लाइफ उपरे हो आम कौन हो डिपेंड करूँ आम चलवाई। ठीक अच्छे।
देख तब लिविंग थिंग फेस ए कॉन्स्टेंट बैरेज ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस और थ्रेट दैट challenge their ability to survive and reproduce. If a species is unable to successfully cope with these threats through adaptation, they may face extinction. तो देखो a constantly changing physical environment require organism to adapt to new temperature, climate and atmospheric condition. तो देखो बेसिकली जहाँ भी सब थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटी है जहाँ भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बा वाइल्ड लाइफ हो बा फॉरेस्ट उपरे जहाँ भी प्रभाव पकाला से कौन कर आमर टोटाल एनवायरनमेंट उपरे प्रभाव पकाला जेहेतु टोटाल एनवायरनमेंट उपरे प्रभाव पकाउची एनवायरनमेंट कौन धीरे धीरे चेंज होगा लगी तो चेंज है कौन आमको गोटे नुआ प्रकार एनवायरनमेंट निजको एडप्ट करके चलने पड़े तो कौ प्रकार एनवायरनमेंट हम मनकर टेम्परेचर चेंज है क्लाइमेट रे चेंज आसूची एटमोस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस आसूची तो यही प्रकार चेंजेस प्रकार जो कंडीशन आसूची ताकू नहीं हमको एडप्ट करने को पड़े आउ तुम जानिच जदि आम एडप्ट करके चलिलु ताले आम सर्वाइव करबा जदि एडप्ट करि परिबानी ताले आमर कोन होची आमर सेठी मृत्यु भी पारे तापर देखो लिविंग थिंग मस्ट ऑल्सो डील विथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज volcanic eruption, earthquake, meteor strike, फायर एंड हरिकेन्स आउ मध्य किछिटा नेचुरल डिजास्टर मध्य होता है से नेचुरल डिजास्टर पाई मध्य आमर लिविंग थिंग ऊपर कौन अच्छे सेटा गोटे प्रकार हार्मफुल पड़ी थाए बा सेटा को मध्य लिविंग थिंग कौन करता है डील करने को पड़ी थाए तब देखो आज न्यू लाइफ फॉर्म एराइज and interact species are further challenged to adapt to one another to deal with competition, predation, parasitism, disease and other complex biotic processes. आउ मध्य कौन आम जानिचु जे आमे जेतिक भी लिविंग थिंग अच्छु आमे समस्ते एक अन्य ऊपर कौन निर्भर करूँ आमे एक अन्य सहित आमर कौ प्रकार रिलेशनशिप अच्छी आमे कंपिटिशन मध्य करिथाउ आमे माने एक अन्यर शिकार मध्य करूँ आमे पारासिटिज्म रिलेशनशिप रे रहू डिजीज मध्य क्रिएट करिथाउ एवं कॉम्प्लेक्स बायोटिक प्रोसेस रे मध्य आमे गति करिथाउ तो एपर्यंत तुम जहाँ भी पढ़िल कौन जानिल गोटे हूँ देख प्रथम देख एनवायरनमेंट कौ प्रकार चेंजेस आसला ताकू नहीं आमे केमिति एडप्ट करि पारलु आउ को प्रकार स्ट्रेस आसला ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा वाइल्ड लाइफ उपरे कौन कौन सब माने प्रभाव पकेला आउ मध्य कौन आमे एक अन्य सहित कौ प्रकार कंपिटिशन करिथाउ तो एई विषय आमे जानिले ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखिबा आमे In recent evolutionary history, threat facing many animals and other organisms have been driven primarily by the effect of single species जोटा देख single species human है the extent to which human have altered this planet has affected countless species and has initiated existence on such a vast scale that many scientists believe we are now experiencing a mass extinction that is the sixth mass extinction in the history of life on earth. The deforestation is also one of the main reasons for the loss of wildlife. तो देखो आउ गोटे मतलब डिफरेस्टेशन गछ को आम काटिबा बा फॉरेस्ट को नष्ट करिबा मास किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल ऑफ देयर मीट बोन फ्यूर तब देखो टीथ हेयर स्किन एक्सेट्रा आर गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड therefore the need of wildlife conservation has now becomes a necessary वर्तमान आम आसवा जे जेहेतु आमे माने यही सब उपरोक्त जहाँ भी एक्टिविटी हो चाहे यही एक्टिविटी हो बा यही एक्टिविटी हो जहाँ भी सब एक्टिविटी हो तेणु आमको ए वाइल्ड लाइफ रो जो कंजर्वेशन अच्छी से आमको गुरुत्व देवा निहाती दरकार अच्छी तेणु देख पॉपुलेशन ग्रोथ expansion of agriculture and livestock raising building of cities and road and pollution are among the many pressure on the natural habitat of wildlife along with illegal hunting habitat reduction and its degradation has threatened the biodiversity of the region where these are rampant तो देखो like forest wildlife is also a natural resource
which not only help in maintaining the ecological balance but is also beneficial from economic, recreational and aesthetic point of view. There was a many there was a time when human interference was minimum. The number of wild animal that was quite high and there was no problem of their protection or conservation. But with the expansion of agriculture, settlement, industrial, and other developmental activity are mainly due to greed of men, the number of wild animals gradually becomes lesser and lesser. तो बेसिकली आम ह्यूमान मान जो जो एक्टिविटी सब अच्छी से वाइल्ड लाइफ दिन को दिन तार संख्या कौन हो कमेवाक लगुच. With the result that several species of animal have become extinct and several other are the verge of being so. तो एतिकी तुम जान लो. बर्तमान आम टे देखा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कौन. Ecology is the study of earth systems and is integral in wildlife conservation. We cannot begin to protect an animal without knowing that it happen around it. Wildlife conservation encompasses all human activities and effort directed to preserve wild animal for extinction. It involves both protection and scientific management of wild species. Wildlife and natural have largely been associated with human or numerous emotional and social reasons. Wildlife plays an essential role in the ecological and biological process that are yet again significant to life. The normal functioning of the biosphere depend on the endless interaction among animals, plant, microorganisms. Wildlife has occupied a special place of veneration and preservation in various cultural of the world. तो बेसिकली से कौच जे वाइल्ड लाइफ रो बहुत इंपोर्टान्स अच्छी आमर जो प्रकार जो इकोलोजिकल जो एसेंशियल रोल अच्छी से वाइल्ड लाइफ रो बहुत इंपोर्टान्स रोल अच्छी कहीं आम जाचु जे ये आमर इंटराक्शन होता है कौ मान भितर इंटराक्शन होता है प्रोड्यूसर जे प्लांट एनिमल्स कंज्यूमर किंबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर मानकर बहुत इंपोर्टान्ट रोल थाए. ठीक अच्छे. Preservation of wildlife does not mean a blanket protection to all faunal and floral species. Rather, it implies a proper judicious control over the multiplication of plant and animals which interact together to provide a proper environment to the man whose very existence is in peril today. Due to the irrational use of natural and biotic resources of the earth in the past, most of the wildlife has been destroyed beyond retrieval. It is our urgent duty to protect the natural splendor of ecosystem and to evolve a system of coexistence with every living creature upon the earth. तो बेसिकली जहाँ भी आम पास्ट रे जहाँ भी एक्टिविटी होती जो कि आमर एनवायरनमेंट उपर अफेक्ट करिछि बा आमर वाइल्ड लाइफ रो जो क्षति होती बर्तमान आमर ड्यूटी अच्छी ताको पुणी थरे आमको सजेबाको हबो. ठीक अच्छे. All the most country of the world are very particular regarding conservation and wildlife. The number of wild animal is reducing day by day. तेणु बर्तमान कौन से कौच जे बहुत गुड़ाक कंट्री अच्छी जो मैंने कौन कर कि बर्तमान से सतर्क हो गले कंजर्वेशन करने से लगिगले. ठीक अच्छे. तापर देख वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
is the international agency which is doing commercial work in the promoting the protection of wildlife. तो बेसिकली एटा मन रखी तो वर्ल्ड वाइड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड जी अच्छी सी बर्तमान से गोटे हूँ इंटरनेशनल एजेंसी जी कि विभिन्न प्रकार प्रोटेक्शन पाई बहुत गुड़ाक स्टेप नहीं से कौ प्रकार स्टेप नहीं देखा आम देख से स्टेप नहीं टू देख से नहीं कौन प्रथम देख टू सर्भे and collect all the information about wildlife, especially their number and growth, to protect habitat by protecting forest, to delimit the area of their natural habitat. तब 4 नंबर पॉइंट होची to protect wildlife from population and from natural hazard. 5 नंबर होची to impose complete restriction on hunting and capturing the wildlife. तब 6 नंबर देखो to impose restriction on export and import of wildlife product and severe punishment to be given to those who indulge in this activity. ता माने कौन से बेसिकली कहूँ जो आमे माने जो इम्पोर्ट बा एक्सपोर्ट करूँ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को ठीक है से प्रोडक्ट को जी इम्पोर्ट बा एक्सपोर्ट करूँ बा आमदानी बा रप्तानी करुँची ताकू रोकिबा पई होची से व्यवस्था करिछि. तब 7 नंबर होची टू डेवलप गेम सैंचुरीज फॉर स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल और फॉर जनरल वर्ल्ड लाइफ. तब देखो 8 नंबर टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट दोज स्पेसीज हुज नंबर इज भेरी लिमिटेड. तापर देखो जो मानकर जो स्पेसीज मानक नंबर बहुत कम अच्छी कम मात्रा से अच्छा स्पेशली अरेंज कराई कौन प्रोटेक्शन स्पेशल अरेंज कराई. तापर देखा टू डेवलप जनरल अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. तब देखो टू एडॉप्ट ए सिस्टम ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ट्रेन पर्सनल अर्थात ट्रेनिंग नहीं ना ट्रेनिंग माध्यम आम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को बुझा. तो ये 10टा पॉइंट बेसी किसी डिफिकल्ट ना एकदम जहाँ भी मुझे तुमको ये नोटा दूसरी नोटा संपूर्ण भाव में पूरा इजी अच्छी तेणु मुझे तुमको बेसी एक्सप्लेन ए करूना कहीं तुम बुझीपारुथ ए आम मेन हो गोटे रचना परी तुम छोट दिन पढ़ीच जे वन्य जीव संरक्षण आम कहीं करवा तार उपकारिता कौन तुम जब ता विषय भी तुम लिखिदेव से भी तुम मार्क पाइपर ठीक अच्छे. तो तेणु को तुम नोट बनिकिना लेख ठीक अच्छे. ये जानवर कौन देख इंडिया इज ए गुड एग्जांपल वेयर सेveral स्टेप हैव बीन टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. देख इट इज ए कंट्री ऑफ वेरिड वाइल्ड लाइफ वेयर मोर देन 500 टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 2,100 types of birds, about 20,000 types of reptiles and fishes have been found. According to an estimate, in India, about 200 species of wild animals and birds have already become extinct अर्थात ऑलरेडी हमारे कौन हो लोप पाई गले. Another 2,500 are on the verge of extinction अर्थात आहरी 2,500 पाखापाखि अच्छा जो मैंने ऑलरेडी लोप पाइबार उपरे अच्छी है. सम ऑफ देम आर ब्लैक बग देख कौ मैंने ऑलरेडी आम देश लोप पाइबापी अच्छा देख ब्लैक बग तापर देख चिंकारा उल्फ स्वाम्प डियर नीलगाई तापर देख इंडियन गेजल तापर देख एंटेलोप टाइगर राइनोसरस गिर लायन क्रोकोडाइल्स फ्लेमिंगो पेलिकन बस्टार्ड तापर व्हाइट क्रेन ग्रे हेरन तापर देख माउंटेन क्वेल एक्सेट्रा एमाने ऑलरेडी लोप पाइबार माने कगारे अच्छा ठीक अच्छे. इन इंडिया द गवर्नमेंट एंड एनजीओ आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. तेणु इंडिया कौन जेबे प्रोटेक्शन लगी पड़ी. तेणु यही जगह मन रखि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है अमेंडेड इन 2002 have several provision for the conservation of wildlife. तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट देख बहुत टाइम ये क्वेश्चन भी आसे. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे होता 1972 आउ अमेंडमेंट केबे होता 2002 रे ठीक अच्छे. जो जहाँद्वारा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विभिन्न प्रकार प्रोविजन सब कराई. देख
India is blessed with a total of 771 protected area. देखो एतिकिटा हमर protected area अछन, that it include 104 104 national park हैला। तापर देखो 544टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 46टा कम्युनिटी रिजर्व एंड 77टा कौन अच्छे आमर कंजर्वेशन रिजर्व अच्छी। ठीक अच्छे। तापर कभर टोटाल एरिया केते अच्छी, एटा होची टोटाल एरिया अच्छी। ठीक अच्छे। तो एटा को मन रखिबा हमें। तापर देखो केते अच्छे 1,62,099.47 किलोमीटर स्क्वायर रेंज रे हमर अच्छी टोटाल एरिया, जोटा कि केते कवर करची 4.93% ऑफ द कंट्री, अर्थात 4.93 शतकड़ा टोटाल कंट्री रो जेतकी अछि ताको हमें एई प्रकार कवर प्रोटेक्टेड एरिया हिसाब रे कवर करिछु। ठीक अछि। दिस प्रोटेक्टेड area have been established all over the country in order to secure the future of the endangered species। तो कहीं को प्रोटेक्शन एरिया कराला कहीं आम देश में जी भी प्रोटेक्टेड माने एंडेंजर स्पेसीज अच्छी से प्रोटेक्शन देवाई यही सब प्रोटेक्टेड एरिया सब कराई। ठीक अच्छे। आउ मध्य कौन स्टेप नहीं देख एपार्ट फ्रॉम दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। एटा मन रखि था केबे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक केबे ही थाए 7th of October एवरी ईयर, अर्थात 7 अक्टोबर रे प्रत्येक वर्ष आमे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सप्ताह पालन करूँ। बट स्टिल देर इज लॉन्ग वे टू गो इन दिस डिरेक्शन। आहरी मध्य हमको आग को आहरी बहुत सतर्क हेबाकू पड़िबो हैला। फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देयर आर 3 बेसिक नीड्स। आमर 3टा बेसिक नीड दरकार, एक्वाटिक फूड एंड वाटर, प्लेस ऑफ लिविंग एंड प्लेस टू ब्रीड इन सेफ्टी हैला। तो बेसिकली आमर जलज जो खाद्य हो बा वाटर हो सेटा मध्य दरकार, आउ मध्य जो जगह रहिबा पई प्लेस ऑफ लिविंग सेटा मध्य दरकार, एवं जोठी आमे प्रजनन करि परिबा प्लेस ऑफ ब्रीडिंग सेटा मध्य दरकार। ठीक अछि। तब नेक्स्ट देखिबा हमें टू अचीव दिस द फॉलोइंग मेजर्स आर बीन प्रैक्टिस। तो से आमे किछिटा स्टेप नेबाको हमको निहाती दरकार। कौन रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क सेंचुरिया आर लेफ्ट एक्सप्लॉइटेड where total unexploitation is not possible. The cutting operation of the forest is done in limited block at a time। तब देखो growing of a single variety of the plant is discouraged as far as possible, instead mixed vegetation is encouraged। तब देखो natural opening of the forest water hole and the river side are guarded against poachers। आउ देखो control burning of grassland to increase forage and the preserve organic materials in the soil is done in block with unbound area in between। तो देखो provision for dust bath and artificial salt lick are made in the forest for the maintaining the normal health of the animals। तो एगुड़ा हूँ विभिन्न प्रकार स्टेप नि आउ कौन स्टेप नि देख ग्राजिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक इज डेंजरियस टू ए वाइल्ड एनिमल as the latter can never compete successfully with the domestic stock। Moreover, the domestic stock may be possible for transmitting several contagious disease, hence grazing by the domestic stock is avoided as far as possible। तब देखो cultivation near the sanctuaries किंबा park is also avoided to prevent ecological hazard due to pesticide। तो बेसिकली जो से कौन कहला जो ग्राजिंग जो करा जाए ग्राजिंग को मध्य अटकेबाको पड़िबो। को जगह अटकेबा पड़िबो जंगल अटकेबाको पड़िबो, क्या विभिन्न प्रकार कंटान्यूअस डिजीज मध्य हो पारे हैला। आउ कौन जो कल्टिवेशन होता है चाष करा जाए से चाष को मध्य आमे सांचुरियान किंबा सांचुरीज किंबा पार्क पाखरे अटकेबा, कहीं सेथु जो हार्मफुल जो पेस्टिसाइड द्वारा दरकार पड़े वाइल्ड लाइफ मान ऊपर कौन हुए से डेंजर प्रभाव पकेब। तापर 8 नंबर देखो साइंटिफिक स्टडी बाय क्वालिफाइड पर्सनल स्पेशली ऑन थ्रेटेन्ड स्पेसीज ऑफ
wild animals are encouraged in order to assess the and improve their status, even by breeding them in captivity and rehabilitating them in suitable habitat. Several such measurements have been undertaken and many more are needed to halt the decline of wildlife and to create conditions in which it can flourish with its diversity in natural setting. But nothing could be fruitful without educational and publicity program. तो देख बेसिकाली जहाँ भी प्रोग्राम कहला यहाँ देख इम्पोर्टाट पॉइंट कौन सबुठ इम्पोर्टाट पॉइंट है जे सबुठ ऊर्ध्वे शिक्षा एवं लोक मानक सतर्कता करवा निहाती दरकार है तो फॉर चेंज इन द ह्यूमन आउटलुक स्पेशली इन द स्कूल चिल्ड्रेन हु आर द बिल्डर्स ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी। तो बेसिकाली स्कूल छुआ मानकू बा छोट छोट छुआ मानकू एई विषय जनइबा निहाती दरकार अछि। तो देख नेक्स्ट होची मेथड कौन कौन आम जाना। तो देख मेथड्स होची मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फौनाल एंड फ्लोरा स्पेसीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेथड गोटे होची इन सिटू कंजर्वेशन गोटे होची एक्स सिटू कंजर्वेशन। अच्छा इन सिटू और एक्स सिटू कौन इन सिटू माने होची प्रथम बुझे दोची तापर पढ़ी देबी हैला एटू तुमको टिके जणेबार निहाती दरकार अछि। तुम प्लस टू रे भी जानि थिबो आउ टिके मु कहि दोची इन सिटू होची माने जोटी के गोटे नेचुरल हैबिटेट मध्य रे जीवजंतु मानकू रखा रहिले आ सेमानकू आमे प्रोटेक्शन देलु किंतु एक्स सिटू होची सेमानकू नेचुरल हैबिटेट रु आनिकिना गोटे जगह आमे आर्टिफिशियल गोटे तांकर हैबिटेट तयारी करबा एवं सेही जगह सेमानकू आमे रखिकिना तांकू आमे प्रोटेक्शन देबा। तो इन सिटू जदि मु आहुरी मते एग्जांपल देबा नेशनल पार्क एटा होची इन सिटू हैला आउ एटा होची हमर मन कर जूलॉजिकल पार्क किंबा आमे एक्स सिटू रा आउ मते एग्जांपल नै परिबा नंदनकानन हैला। तो देख नंदनकानन कौन से नेचुरल हैबिटेट नुहे एठी कौन आम नेचुरल हैबिटेट आनिकिना रखीचु किंतु इनसिटू माने कौन जोठी कि कौन तांको आमे कौनसी प्रकार आमे सेठी किछि आर्टिफिशियल किछि आमे सेठी करि नै सेठी से तांकरी नेचुरल हैबिटेट से माने रहिले एवं आमे तांको प्रोटेक्शन देलु। तो देखो इनसिटू कंजर्वेशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड इन it this approach include protection of total ecosystem through a network of protected area the common natural habitat हैला एटा होची natural habitat जेटा मु टिके आगु कहउतली हैला जेटा होची protected area that have been set for in situ conservation of wildlife include national park sanctuaries biosphere reserve तापर देखो several wetland जोटा होची मैनग्रोव हो बा कोरल रीफ हो एक्सेट्रा तापर देखो सैक्रेड ग्रुप एंड लेक्स एगुड़ा होची तमन इन सिटू अंडर रे जीवो। तो एक्स सिटू अंडर रे कोन जीवो एक्स सिटू देखो इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ द रेयर प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ थ्रेटेन्ड एनिमल स्पेसीज इन जूलॉजिकल एंड बोटानिकल गार्डन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लांट स्पेसीज इन द फॉर्म ऑफ सीड एंड सीड बैंक अर्थात आम मन कर किसी यदि प्लांट सेटा ऑलरेडी माने लुप्त होगा कदारे थिले तांकर आमे सीड को लेकिना कलेक्ट करिकिना ताको स्टोर करी रखि परिबा ठीक अछि बाय मीन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक रे मध्ये आमे कोन करि परबा ए तांकर टिश्यू को लेकिना आमे स्टॉक करि परिबा इंडिविजुअल of the species are maintained in the artificial condition under the human supervision अर्थात आर्टिफिशियल अंडर रे ताको आमे ह्यूमन सुपरविजन बा ह्यूमन रो माने मनुष्य रो तदारक रे आमे ताको रखि परिबा। These methods include maintaining the zinc bank pollen preservation and most useful in the देखो क्रायो प्रिजर्वेशन बाय with tissue culture and germ plasm conservation are made। तो एई गुडा को तुम होची एक्स सिटू अंडर रे जिवे। तापर नेक्स्ट देखबे हमें कोन देयर आर 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैला कोन कोन ऑब्जेक्टिव अछि देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पाई कोन कोन ऑब्जेक्टिव अछि हमें पढिबा टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एयर water and soil। तो देखो टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पेसीज और द रेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म। तब देखो to ensure a continuous use of species in fact ecosystem that support rural community and urban industries।
तब देखो thus the conservation of wildlife has broad objective not only concern with biotic जोटा होची plant animals microorganism but also abiotic factor. Therefore conservation or biodiversity is a complex operation which is specially concerned with plant animals microorganism and with these non-living elements of the environment on which they depends. तो बेसिकली आमे जहाँ भी अच्छी आमर जो बायोटिक हो बा ए बायोटिक हो समस्ते आमे इंटर रिलेशनशिप रे अच्छु जहाँकि आम गोटे कौन आम एनवायरनमेंट को बैलेंस करुच्ची बा इकोसिस्टम को आमर बा इकोलॉजी को आम इकोलॉजिकल जो फैक्टर को से अफेक्ट करुच्ची एथुरु जदि गोटे भी जदि नष्ट हैला ताले ये संपूर्ण भाव रे जो आमर जो इकोसिस्टम अच्छी ताकू अनबैलेंस करदेव ठीक अच्छे तेणु यहाँ हूँ तार इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ठीक अच्छे तो यहाँ रहा आज टोटाल वीडियो मुझे तुमको कहली आशा रखुच्छी तुमको निश्चय पसंद आसी नेक्स्ट क्लास रे आम अधिक पढ़ा आज थैंक यू।